It's going to be yet another power pack session, yet another interesting charcha. We'll just wait for a few seconds so that LinkedIn sends in the notification. Let people join in, and then we'll kick off the conversation. Uh, Perfect. How are you doing, Jasmine? Until then, what's going on? I am really great. How about you? What's up with you? All good. Just work content. That's something Yeah, like same. you can also relate with, I'm sure. Same, of course. Perfect. LinkedIn notification. I'm just waiting for that. Yeah, now it came. Perfect. So welcome, guys. I'll start with Jasmine's introduction. I'm sure you must have come across her content. I'm sure her audience is there, my audience is there. But for the people who are not aware, so she is an organic growth expert. She is giving out some amazing tips on resume building, interview preparation. She's an active creator both on LinkedIn, Instagram, creating content. So thank you so much, Jasmine, for your time. It will be a pleasure talking to you. No worries, no worries. Absolutely. People who have joined in, just a request like you can tell us your name. We would love to greet you personally. Any questions on personal branding, LinkedIn, resume, interview, just feel free to ask in, and I'll definitely take it up with Jasmine during the conversation. Uh, we have a few hellos, Gajendra, Naina, Pavan. Hey guys, thanks for joining in. Perfect. My first question to you, Jasmine, is my first pointer is that like take us to that day one of LinkedIn. Like I've had this conversation with a lot of people कि we start with a mindset कि यार LinkedIn पे तो सिर्फ कुछ मतलब update करके छोड़ देना है. So how did it start for you, and what mindset change has come now with respect to LinkedIn? Yeah, when I started on LinkedIn, I was in my third year of college. Mm-hmm. एंड ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि कंटेंट बनाना है. आई डिडंट नो कि एग्जैक्टली करना क्या है. वन ऑफ एक्चुअली आई वाज अटेंडिंग दिस सेशन इन आरएलए, Okay. रामलाल आनंद कॉलेज. सो ही वाज टेलिंग अस कि लिंक्डइन अकाउंट बनाओ. तो Hmm. आप जब सेकेंड या थर्ड ईयर में होते हो आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या है एग्जैक्टली. लिंक्डइन अकाउंट क्या होता है यार, कैसे बनाऊं मैं इसको. तो उस Right. टाइम पे उन्होंने काफी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, उसको रेज्यूमे में उसका लिंक डालो, ये सब करो. सो आई वाज लाइक Hmm. ठीक है, बना के देख लेते हैं. Right. फिर आई वेंट होम, आई मेड माई अकाउंट. आई एक्चुअली हैड एन अकाउंट बट मैं यूज नहीं करी थी, तो आई जस्ट Hmm. ओपन दैट. आई ऑल्सो फॉरगॉट माई पासवर्ड. तो मैंने पूरा वो रीसेट किया. फिर उसके बाद आई सॉ वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेकिंग कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन. ठीक है, एंड Hmm. आई ऑलवेज लव्ड राइटिंग. Right. मतलब जब मैं छोटी थी आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज एंड आई यूज्ड टू जस्ट जर्नल अ लॉट. आई यूज्ड टू टेक ऑन अ डायरी एंड उसमें मैं छोटी छोटी चीजें लिखती रहती थी. So Right. I thought कि ठीक है, once in a while if I post something, maybe it increases my reach, visibility, and also because I loved it, so it acted as a hobby. Hmm. So I started writing. Week में एक बार कुछ लिख दिया या कुछ कर लिया. धीरे धीरे Right. when it started getting views, तो Hmm. and my account started growing. तो धीरे धीरे I checked other people's profiles जो थोड़े से grow हो चुके थे already. I saw कि वो अपनी प्रोफाइल में इतना ऑप्टिमाइज करके रख रहे हैं उसको. उनकी Hmm. एकदम हेडशॉट प्रोफाइल पिक्चर है, उनका कवर लगा हुआ है, टाइटल्स लिखे हुए हैं. एवरी Right. एक्सपीरियंस हैज समथिंग टू से. और मैंने Hmm. इतना ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा था, तो आई थॉट कि वो भी करते हैं. लाइक आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम सम पीपल जो मेरे से बड़े थे, मेरे सीनियर्स थे. आई स्टार्टेड ऑप्टिमाइजिंग माई प्रोफाइल, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट. धीरे धीरे वो ग्रो हुआ. लिंक्डइन वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट आई जॉइंड. इंस्टाग्राम तो आई जॉइंड वेरी मच लेटर, लाइक Hmm. आफ्टर 2 years. Right. So उस टाइम पे I was not that consistent, but if I was that consistent, अगर मैं रोज या एटलीस्ट हफ्ते में 5 डाल रही होती, so I would have had a lot more reach than Hmm. I have right now. Right, right, right. Amazing. And I think, as you said, you attended this session in RLA, and that's what kind of sparked your journey on LinkedIn. Yeah, I think people who are watching this, this can be a spark for starting to create true, content on LinkedIn. true. And if you have been waiting to observe or waiting, I don't know, for other excuses that people give that don't have time or something like that. But I think if you really want to, then I mean, why not today? Right. So that's ये uh, टाइम की कमी तो सबके पास है, हमारे पास भी है. exactly, आई मीन exactly. एवरीवन इज डूइंग अ जॉब, किसी ना किसी के पास है, बट इट हार्डली टेक्स 15-20 मिनट्स टू मेक वन पीस ऑफ कंटेंट. उसके बाद Correct. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एडिटिंग, मे बी ग्रामर चेक करना, एंड उसके Hmm. बाद यूर गुड टू गो. इट एक्चुअली विल गिव यू अ लॉट ऑफ बहुत एडवांटेजेस है उसके. इट विल गिव Correct. यू अ लॉट ऑफ स्कोप इन एवरी फील्ड.
राइट। एंड ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो कभी सोची भी नहीं थी स्टार्ट में, लाइक आई मीन ट्रू। आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ कि मैं ऐसा कोई लाइव सेशन भी कर रहा हूँगा, या आई जस्ट स्टार्टेड कि पसंद आ रहा था, थोड़ी रीच मिल रही है, एग्जैक्टली लेट्स एग्जैक्टली गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली। राइट। धीरे धीरे परफेक्ट। you must have gotten a lot of leads from LinkedIn. I एब्सोल्युटली। have gotten all my leads from LinkedIn. तो धीरे सेम। धीरे I thought कि यार अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम्म। इवन इंस्टाग्राम से उतनी लीड्स नहीं आती जितनी लिंक्डइन से आती हैं। सेम। ट्विटर से भी काफी आती है, बट आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन ट्विटर। मे बी इन हम्म। फ्यूचर। राइट। आई थिंक लिंक्डइन इज द गोल्ड माइन जहाँ पे लीड्स की बात आती है, स्पेशली बिजनेस काइंड ऑफ लीड्स फॉर क्लाइंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक ट्रू। no one beats LinkedIn in that. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Perfect. We have a question from Nana. I'll take it up on the screen. यस। How to approach people and make your content grow and reach many. So some tips for Nana on that. Do you have something to say? I would love to hear what you have. In this, I would say एक तो कि like for every profile it's subjective, so there can't be a generic answer for uh, someone. But I think based on my learning, what I've seen is storytelling kind of works. So be yourself, Hmm. authenticity, just show your real side. And I have been even guilty of doing this, like some point of time, like I was posting some stuff and I realized yeah, I'm not connecting with this what I'm posting, right? Hmm. So Hmm. when I realized, I stopped doing that. So I Hmm. could figure out कि यार that way I'm not even enjoying the process, and I might just end up taking a break. So I think that was a major जबरदस्ती हो रहा है। learning. Yeah, what about you? एक्चुअली आई बिलीव कि आप एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखो, तो Hmm. आपको क्या अच्छा लग रहा है आपको वही पोस्ट करना चाहिए कि मेरे को पढ़ने में क्या मजा आएगा और True. पढ़ाने में क्या मजा आएगा। True. सेकेंड थिंग इज True. कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने कुछ पोस्ट किया और हम कोई ऐसे अपने दोस्तों से जाके ये नहीं बोलते हैं कि यार इसको आगे पहुंचाइए और इसको कमेंट Ah. करिए, वो हम ऐसा नहीं करते हैं। Right. वो ग्रेजुअली इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोस्ट पे हमारे थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स आ रहे थे या सेकंड पोस्ट पे बिल्कुल। आ रहे थे, मतलब बहुत टाइम हो गया मैं करते हुए, तब जाके वी हैव रीच्ड अ पोजीशन। और अभी भी ऐसा नहीं है कि वी आर डन, you अभी तो know स्टार्ट ही है, अभी there's a, just yeah, just it's the start, there's process. a lot more to go. It's a Right. step by step process. So first of all don't expect कि मेरा पहला दूसरा पोस्ट ही एकदम चल जाएगा, until unless कि Hmm. कभी कभी कुछ चीजें ऐसे ब्लास्ट कर हो जाती जाती है, हैं या वायरल हाँ। हो जाती हैं। Right. एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे ही होती हैं चीजें। आई हैव सीन पीपल जिनके 3-4 हजार फॉलोअर्स हैं, उनके भी ऐसे 100-100 200 लाइक्स आते हैं। बट Hmm. अगर आपके 20-30 हजार फॉलोअर्स है तो यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट मोर लाइक्स, एंड आपके Correct. 100 के है तो यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट मोर लाइक्स। तो यू Hmm. विल गो थ्रू दैट स्टेज, बट Right. मेक श्योर कि आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स बहुत ही अट्रैक्टिव हो Attractive एक्चुअली, one. कि आई कैंडी जैसे कि मतलब लोग ऐसे पढ़ के सोचे कि मेरे को सी मोर करना है। Correct, correct, correct. Maybe content. This conversation I was hearing by like I think it was a podcast by Raj Shamani. He was talking. Yeah, saturation तो देखो हर जगह है. We can't make it as an excuse कि saturate हो गया तो हम हम्म। content नहीं बना सकते. I think हम्म। what matters is आप उसको किस तरीके से दिखाते हो. Like the same प्रेजेंट करते content piece, हो। but कैसे present करते हो. And इवन इंस्टाग्राम पे a lot of people are saying कि लाइफस्टाइल क्रिएटर्स नहीं चल रहे हैं अब, क्योंकि इतने सारे hmm, लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं मार्केट में कि अब जो न्यू आ रहे हैं ना उनका कंटेंट रीच ही नहीं कर रहा है, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू correct. सी वही सेम व्लॉग्स वही सेम चीजें एनीमोर। बट Right. देयर वाज दिस गर्ल आई सॉ, व्हाट शी वाज डूइंग इज शी वाज पासिंग ऑन न्यूज एज बीइंग अ मीन गर्ल। मतलब आई Okay. जस्ट केम अक्रॉस अ कंटेंट एंड ऐसे बहुत ही ना सैवेज तरीके से रेजिना जॉर्ज स्टाइल में शी वाज पासिंग ऑन एंड क्रिएटिंग अ न्यूज आर्टिकल इनटू अ पीस Right. ऑफ गॉसिप। सो Hmm. वी आर ह्यूमंस, हमको गॉसिपिंग बहुत पसंद है, स्पेशली लड़कियों Correct. को। एंड Correct. मोस्ट गर्ल्स आर नॉट इनटू ज्यादा न्यूज पढ़ना या ये वो। इवन अ लॉट ऑफ Hmm. स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इनटू दैट। वो बड़े होके आप धीरे धीरे उस फेज में चले जाते हो। Right. बट अगर आप वो देखोगे ना, लोग उसको पढ़ेंगे, लोग उसको सुनेंगे। सो शी हैज गेन अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स बिकॉज दैट्स समथिंग न्यू आई हैव सीन। आई हैव नॉट सीन एनी सच कंटेंट पहले। तो Correct. अब अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आपको कुछ अलग कुछ न्यू करना पड़ेगा जब आपको ग्रो करना है। तो Hmm. मे बी थिंक ऑफ दैट, आपका यूएसपी क्या है, मतलब मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, करती हूँ। राइट। राइट। एंड उस पे बहुत ओवर थिंकिंग भी हो जाती है ना, ये भी देखते हैं कि यार मे बी कुछ आइडिया आता है, लाइक आइडियाज डू कम, बट लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि यार वो क्या सोचेगा, मेरे ऑफिस में क्या सोचेंगे, ये क्या हाँ ट्रू। होगा। तो आई थिंक उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के, अब जैसे कैरी मिनाटी ने बोला था एक पॉडकास्ट में कि अगर वो सोच लेता कि लोग क्या बोलेंगे तो आज वो कैरी मिनाटी नहीं होता, ट्रू मतलब ट्रू ट्रू। उस सेंस में। लोगों ने तो बहुत बोला होगा यार ये कितनी गाली देता है।
कि क्या एग्जैक्टली, आई बोलते मीन रहते हैं, दैट बट टुक अ लॉट ऑफ गट्स, एंड आई मीन उसी गट्स का ही इज अर्निंग, लाइक बेस्ड ऑन what he did in that sense. Perfect. इनिशियली यू ऑल्सो मस्ट हैव फेस दिस इशू राइट कि लोग क्या सोचेंगे, व्हाट इफ आई स्टार्ट पोस्टिंग दिस एंड लोग बोले कि मैं अब तो वार्निबी Yes. बन रहा हूँ या वट Yes. एवर, यू नो, हाउ डिड यू Yes. ओवरकम दैट फियर? मुझे स्टार्ट में ऐसा होता, लाइक आई स्टार्टेड अलोंगसाइड माय, यू कैन से जब ऑफिस था, फुल टाइम जॉब थी, उसके साथ ही आई स्टार्टेड। सो आई यूज्ड टू हैव दिस फियर कि यार ऑफिस में कोई मजाक तो नहीं उड़ जाएगा, मेरा इंप्रेशन कैसा जाएगा, यस। लोग ये देखेंगे, क्योंकि आई एम दैट पर्सन हु क्रिएट्स लाइक फनी रील्स, एंड मतलब मैं कैरेक्टर्स बनाऊंगा और थोड़ा सा क्रिंज वो आई हैव कहते हैं ना सीन। वो उसमें, तो मैं वो करने से डरता नहीं हूँ, बट दैट टाइम दैट फियर वाज देयर। बट जब भी वो फियर आता था, देन वो मेरा जो लॉन्ग टर्म एम था, like I am very desperate to create an impact. I'll be very honest, like right, I can't sleep peacefully until I've done that. So उसके लिए whatever it takes, that does not cross the line, but थोड़ा सा अगर क्रिंज भी करना हो, थोड़ा सा फनी एलिमेंट करना हो, थोड़ा सा मुझे चलता है अगर रोल प्ले करना हो, तो आई एम ओके विद दैट कुछ भी। स्टफ। तो आई थिंक उससे उससे ही मज़ा भी आता है। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी ऐसा हो गया कि पहले पहले लाइक्स कमेंट्स व्हेन यू स्टार्ट थोड़ा सा ऑब्सेशन था, पर अभी आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, एंड खुद के कंटेंट में मजा आता है, तो वो बनाते जाते हो आप बिना सोचे। व्हाट अबाउट यू, लाइक हाउ इज द नंबर साइकोलॉजी चेंज्ड ओवर टाइम? आई पर्सनली स्टार्टिंग में डिड नॉट केयर अबाउट नंबर्स ना। हम्म। लिंक्डइन पे एज आई टोल्ड यू कि मैंने बिल्कुल इसे अननोइंगली स्टार्ट कर दिया था। इवन राइट। इंस्टाग्राम जब आई स्टार्टेड तो मेरे को था कि बस ठीक है, आई वांट टू spread on this information rather हम्म। than कि कोई लाइक्स आ रहे कमेंट्स आ रहे। ऑब्वियसली दैट द पार्ट ऑफ द जर्नी, ऐसा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि हम लोग नंबर्स के पीछे नहीं भागते हैं। ट्रू। हम लोग एक्चुअली इट्स अ प्रोफेशन फॉर अस, ठीक है, ये भी हम्म। करियर का एक हमारा पार्ट है। हमको इससे भी मनी आता है, इससे भी नंबर्स आते हैं, उसी से ग्रोथ मिलती है। राइट। आई वाज अटेंडिंग दिस सेशन, उसमें आई थिंक वेदांत रुस्ती ने बोला था ये कि हम्म। दो ही चीजें होती है क्रिएटर्स के लिए, मनी एंड पावर। करेक्ट, एंड करेक्ट। मतलब वो चीज़ हमको आगे बढ़ने का वो देती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना चाह रहे। वही हमारा मेन पर्पस होता है कि हम्म। अगर हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ी-सी दुःख होता है कि नहीं चला, हमने बहुत अच्छे से बनाया था, हमने कितना एडिट करवाया था इसको, राइट। नहीं चला, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 2 लोग भी मेरे को आके बोल दें कि मेरे को हम्म। भी बहुत पसंद आया, मेरे को इससे कुछ सीखने को मिला, तो आई वुड दैट बी इज गुड। हैप्पी मोर देन दैट कि वो ऐसे नंबर्स मिले मुझे उससे। ट्रू। राइट, वो जो मैसेजेस आते हैं ना कि आपको कंटेंट इज हेल्पफुल एंड इट हेल्प मी यस। हुँ। डू दिस, आई थिंक दैट इज द रियल मोटिवेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हुँ। रियलाइज एज अ कंटेंट हुँ, क्रिएटर। ट्रू, ट्रू। एंड बहुत सारे ऐसे सेशंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पीपल रीच आउट टू यू कि यू टीच रियली गुड, सो कैन यू टीच एट आवर कॉलेज, कैन यू टीच यस। आवर स्टूडेंट्स, ये वो। तो यस। यू फील कि ठीक है, कुछ तो वैल्यू मैंने क्रिएट की होगी कि पीपल वांट और पीपल सी मी एज़ अ मेंटर और पीपल राइट। वांट टू सी मी एज़ अ मेंटर। ऑब्वियसली आई वुडन्ट से कि बिल्कुल ही हम लोग पावरफुल हो चुके हैं इस प्रोसेस में कि हम लोग सब सिखा सकते हैं आपको, हमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन हम्म। नहीं होती है। बट राइट। हम भी रिसर्च कर करके आते हैं, हम भी उसको अच्छे से पढ़ के आते हैं कि आपको पहुँचा सकें। एंड यू नो, आई आल्सो हर्ड दिस थिंग, पर्सन केम अप टू मी एंड ही वाज़ लाइक, यार तुम्हें तो एक रील करने से ही इतने पैसे मिल जाते हैं। हाँ। आई सेड कि वो एक रील से पैसे नहीं मिलते, हम लोग जो 10-15 रील्स बना के आए होते बना हैं, रहे उसका हैं। टोटलिटी में हमको वो थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक राइट। दैट्स आल्सो पार्ट ना। एक अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मेरे को 31 दिसंबर को सैलरी आ रही है, तो तुम्हें तो 1 दिन की सैलरी मिल गई, वो पूरे दिसंबर की हम्म। सैलरी थी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो पीछे की जर्नी बहुत कम लोग देख पाते हैं, लाइक आई मीन, हुँ। और उससे उससे ओवरवेलमिंग और डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन वो निकल के आता है मोस्टली, हाँ। जो चीज़ें हैं वो इसमें। तो हर फील्ड में ही है। हम्म। अभी इसमें भी ना ग्रोथ सबकी नहीं लिखी होती, मतलब हम्म। ऑब्वियसली देयर कम्स अ टाइम फॉर एवरी क्रिएटर जहाँ पे ग्रोथ होती ही नहीं है, या फिर यू नो यू आर करेक्ट, स्टक एट प्लेट्यू वन बन पोजीशन। जाता है। हाँ, एंड ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ऐसा नहीं है कि वी राइट। कैन जस्ट गो ऑन फॉरएवर विदाउट एनी रीच। करेक्ट। एंड आई हैव सीन दिस फेज माय सेल्फ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस। एंड डेफिनेटली। बट ऑल्सो देयर इज अ टाइम जब चीजें अच्छी भी जाती हैं, यू नो, वी चेंज आवर स्ट्रैटेजीज, वी सी कि क्या हम्म। चल रहा है मार्केट में, वी ट्राई टू बिल्ड दैट। आई थिंक डूइंग दिस स्ट्रीमिंग सेशंस, राहुल ने भी ही हैज इम्प्लीमेंटेड दिस स्ट्रैटेजी कि यू नो हम्म। लिंक्डइन पे दिस इज समथिंग न्यू, मे बी इट विल वर्क। राइट। एंड ऑल्सो 2 लोगों के लिंक्डइन अकाउंट अटैच्ड होते हैं, सो यू नो इट्स अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फॉलोअर्स ऑल्सो। राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक अभी तो म्यूचुअली एक्सचेंज जितना, आई थिंक म्यूचुअल बेनिफिट्स क्रिएट द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स।
is what I Yeah, believe. Like that networking, also. maybe. Yeah. I see a lot of messages जहाँ बोलते हैं कि can you get on a call with me? The first message is, can you get on a call with me? I need some help. अरे भाई क्यों? हाँ, why will I get on a call with you? क्यों? Exactly, exactly. ऐसा free time थोड़ी ना है. But if you form that connect with someone कि Mm-hmm. if you get on a call with me, I can help you in this way. और या आपने पहले Mm-hmm. कुछ ऐसे बात करी हो कि genuinely you are interested in that person, and फिर एक हफ्ते बाद आप पूछ रहे हो कि if you have time, देन सिर्फ 10 मिनट के लिए Makes हम sense. बात कर सकते हैं. अगर नहीं भी है तो देन इट्स ओके, ऑडियो नोट पे भी चलेगा. बट Mm-hmm. फिर लोग बोलते हैं कि लीड्स नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स नहीं आ रहे. तो आई फील दैट इज द गैप दैट मेनी पीपल हैव ऑन कमेंट्स. व्हाट्स बीन योर एक्सपीरियंस विद लिंक्डइन कमेंट्स एंड डीएम्स कमिंग इन? देखो मैं मतलब आई पर्सनली डोंट हैव टू मच टाइम टू रिप्लाई टू ऑल द डीएम्स. आई वुड बी हम्म. वेरी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि हम लोग सब बहुत बिजी हैं. मतलब तुम भी हो, हम भी हैं. ऐसा नहीं है कि हम हर चीज का 5-5 सेकंड में रिप्लाई कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल करेक्ट. गेट एंग्री फॉर सम रीजन कि यार तुम तो रिप्लाई ही हाँ, नहीं हाँ, करते हाँ, हो. हाँ. हाँ, मतलब वो क्लाइंट से पे ऊपर चले जाते हैं, भैया रिवर्ट नहीं किया तुमने. मतलब ठीक है, अब जैसे वी आर डूइंग अ लाइव स्ट्रीम, राइट? हम्म. So we have built that connection. So if you राइट. DM me, I'll reply to you because I see कि ठीक है, this person, I know this person, he's my friend, so I'll reply to you. But I don't know you, so ठीक है, it might take some time for me to get on that key. Second, what राइट. I do is कि I send them a link for a call. हम्म. So it's a minimal amount paid call. So that makes me realize कि ठीक है, if they are willing to pay this, very small amount, they are serious about it. फिर सीरियस. वो करेक्ट. सारे ना लेयर आउट हो जाते हैं जिन लोगों को बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है. They're just there for हम्म. ठीक है, कुछ भी करना है, कॉल करनी है. राइट. So वो for me बनाना ही पड़ता it, है. मेरे को भी हाँ. टॉपमेट का बनाना ही पड़ा था, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि भाई. हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली. एंड हुँ, आप लोग ऐसा मतलब सम पीपल थिंक कि हम लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हम नहीं मैसेज हुँ, रिप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कॉल के लिए भी पैसे माँग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हुँ. इवन आप अपनी फील्ड में एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज़ कि यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग. With करेक्ट. your clients, you are acting the same way. We just have to deal with a lot of people. You don't have राइट. to maybe do that on a daily basis. So करेक्ट. it boils एब्सोल्युटली. down to that. एब्सोल्युटली. परफेक्ट. We have some questions. Let me see Yeah. if there is any relevant one. Uh, okay, थोड़ा career oriented question है. I want to make a career in finance or consulting. What type of internship should I apply for in first year of my college? I mean, you are the boss in this question. What type of internship should I apply? फाइनेंस के लिए तो या फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड कि फाइनेंस या फिर कंसल्टिंग. अगर टाइम है Hmm. दोनों की इंटर्नशिप कर लो, बट आई वुडंट से कि आपके पास इतना टाइम है कि आप 3 महीने उसकी भी करो, 3 महीने उसकी भी करो. अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, दैट्स वेल एंड गुड. एक साल ट्राई फाइनेंस, सेकेंड ईयर में ट्राई कंसल्टिंग इंटर्नशिप, बिकॉज यू मस्ट हैव टू Hmm. अटेंड कॉलेज ऑल्सो. फाइनेंस के लिए अगर आपको ऐसे घर बैठे बैठे कोर्सेज करने हैं, सो आई वुड रिकमेंड NISM, NCFM कोर्सेज. दे आर चीप ऑल्सो. दे विल हेल्प यू रियलाइज कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड और नॉट. अगर आप बड़े कोर्सेज में जाओगे जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, CFA, FRM, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी. अब बाद में जाके आपको रियलाइज हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना है, तो इट विल ऑल गेट वेस्टेड. सो ट्राई Hmm. स्मॉल कोर्सेज ऑन फाइनेंस. और टाइप ऑफ इंटर्नशिप तो आई कुडंट से, बिकॉज I can't say, because finance is an umbrella term. उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. There is investment, portfolio management. There is investment banking. There is trading, stock markets. There is accounting. भी kind of comes in finance, but it's not a main, core finance stuff. तो आपको Hmm. numbers, graphs में interest है, तो आप जाओ portfolio management में जाओ, trading में जाओ. आई कांट से कि आप कौन सी इंटर्नशिप में जाओ. यू हैव टू फाइंड दैट योरसेल्फ. आप Right. इंटर्नशिप एप्स ट्राई करो, लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप्स मिलती हैं. अब गिवन दैट यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो यू गो एंड अप्लाई टू ऑल ऑफ देम. जो भी आपका हो रहा है, मे बी दैट्स योर डेस्टिनी, मे बी Hmm. दैट्स यू गो फॉर. कंसल्टिंग Right. के लिए प्रिपेयर अ लॉट अबाउट केस प्रेप्स एंड गेस्टिमेट्स. केस स्टडीज प्रिपेयर करो. कंसल्टिंग फर्म्स आस्क फॉर दैट. फिर आप कोई भी इंटर्नशिप में अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू में वही आएगा, केस स्टडीज, केस प्रेप्स, गेस्टिमेट्स. तो आई वुड रेकमेंड कि 1 महीने का कोर्स ले लो केस प्रेप्स या गेस्टिमेट्स का. प्रिपेयर दैट, क्योंकि इंटरव्यू में सब मतलब खराब हो जाता है उनका अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उसके लिए. तो इंटर्नशिप पे फिर अप्लाई करना कंसल्टिंग के लिए. Hmm. सो आई Right. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Absolutely. I think Abhi, you got your answer. बाकी तो subjective as she said. Like I think LinkedIn internशाला हर जगह हाथ पाँव मार के ही वो चीज़. हाँ, whatever you हाँ. get at the end of the day, it will work for you. Absolutely.
We have one more question. Tell us something Hmm. about the stepwise. This I think we have already, like, you have already answered that there can't be a like a stepwise for a generic, but still, like, based on your journey, how did your content change over time, or what were your Of course, learnings of कि course. ये format मेरे लिए काफी अच्छा काम कर रहा है? Of course, a lot of my content changed over time. Starting में, I used to do a lot more of बहुत ज़्यादा information and बहुत ज़्यादा Hmm. jargons I used. Hmm. Hmm. Gradually I realized कि a lot of layman language is needed, Right. because LinkedIn पे mostly my content is seen by students. Hmm. Students को हर basic terms भी maybe I have to break it down because I might write कि make your resume ATS friendly, but someone might not even know कि ATS होता क्या है. Hmm. तो Right. I have to break down every single term और धीरे धीरे मतलब sometimes people what they do is कि वो rather than positively writing the first statement they write it negatively Hmm. कि ये चीजें तो कभी मत करना and then they write so some attractive catchy titles पहले मुझे बनाने नहीं आते थे इतने but Hmm. gradually I've learned how to do that थोड़ा सा research करी थोड़ा सा दूसरे लोगों का content देखा तो Right. उससे every creator has to do that कि start का hook बहुत अच्छा रखना पड़ता है so that आगे दो content लोग देखें Right. तो इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती थी कि हाय हेलो बट उससे Hmm. फिर वो हुक खराब हो जाता था तो Right. वहीं से लोग बंद कर देते थे तो आई ग्रेजुअली आई स्टार्ट क्रिएटिंग हुक इंस्टाग्राम पे पहले मैं स्पीकिंग कंटेंट नहीं बनाती थी बट आई रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग स्पीकिंग कंटेंट बिकॉज वो चल रहा है आजकल Hmm. सो Hmm. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एनालाइजिंग व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द मार्केट लिंक्डइन Correct. पे भी थिंग्स आर ट्रेंडिंग अब देखो फोटोज चल रही है पहले कोई फोटो नहीं डालता था बट अब सब डाल रहे हैं हर कंटेंट Correct. पीस के साथ Correct. बिकॉज हमको भी ना बहुत ऐसे लोग बोलते हैं व्हाई पुटिंग दिस फोटो बट चल रहा है तो हमें भी डालना ही है बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन इट्स अ बिज़नेस आफ्टर ऑल। अगर आपका एक जगह पे दुकान चलेगी तो आप हटाओगे थोड़ी ना। आई मीन दैट्स हाँ तो जब फूलिश। बाकी अगर बाकी वो चिप्स का पैकेट 20 में बेच रहे हैं आप थोड़ी 10 में बेचोगे अभी 20 में बेचोगे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो आई थिंक वो ऐसा आता है कि ओपिनियंस, आई थिंक दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड कि व्हेन यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांडिंग, ओपिनियंस हर जगह से आएँगे। लाइक ये हम्म क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों हम्म कंटेंट? अरे ऐसा करो ना, अरे ऐसा होना चाहिए ना। हम्म बट आई थिंक इवेंचुअली लिसन टू एवरीवन। I mean, do what your heart says, and constructive feedbacks really help. But feedbacks without any logic, like if a वी feedback is डोंट coming हाँ from a creator who has done 100K या and then he is या telling you, या makes sense. But मेक सेंस if someone who is not even posting content is telling you कि तुम्हारा content में ये changes आने चाहिए, हाँ तो भाई, वी डोंट केयर अबाउट दैट मतलब अगर आप हमें दो लोग आके हमें बोलेंगे पिक्चर मत डालो तो ऐसा नहीं है ना कि हम वो correct, नहीं करेंगे बिकॉज वी नो इट इज मेकिंग अस ग्रो आवर कंटेंट absolutely, absolutely. Okay, we have one more question regarding internship. Is the hot talk of the town, I guess. So we'll मे take बी up, दे सीन दैट आई एम yeah, doing these sessions of career counseling. yeah, we'll take up this last question, then एक rapid fire करके, then we'll, Okay. yeah, that will be interesting. So this question is, I'll be starting my marketing internship, but in second year I want to take marketing and finance. But some are saying I won't be able to do finance despite having background in finance as commerce student as well grad in BBA. If you REA complete नहीं किया है? If just a sec, screen पे नहीं दिखा रहा है वो. If If you अच्छा मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ. if you read this, please reply. Okay, this is what he said. Okay. First of all, why are they saying you won't be able to do finance? अगर आपको करना है तो you will be able to do anything. वही तो अभी बोल रहे थे अपन, ओपिनियंस आएंगे बट लाइक, हाँ मेरे को अगर एक्टर बनना है तो मैं मेरे पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते मेरे को कि भाई तुम नहीं करेक्ट, बन सकते एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मैं बनूंगी वही जो मेरे को बनना है तो अगर करेक्ट। तुमको बहुत इंटरेस्ट है फाइनेंस में तो फिर गो फॉर इट लेकिन अगर हम्म, तुमको मार्केटिंग साइड ही अपना लग रहा है इंटरेस्ट तो गो फॉर दैट एंड हम्म, हाउ विल यू नो कि कहाँ इंटरेस्ट है वो तुम्हें इंटर्नशिप्स या फिर कोर्सेज करके ही पता चलेगा कि माई क्रिएटिव साइड इज ज़्यादा या माई फाइनेंस और टेक्निकल नॉलेज और नंबर्स ग्राफ्स वो इंटरेस्ट मुझे आ रहा है राइट, so, if you've done an internship in marketing, it will be easier for you to get a job in marketing. ठीक है, that I हम्म, can say. But do an internship in finance also. फिर उसको compare करो बैठ के कि किसमें मुझे ज़्यादा मजा आया. हम्म, फिर go for a job in that. राइट, एब्सोल्युटली Don't listen लॉजिकल to आंसर, anyone else. करेक्ट, करेक्ट, लॉजिकल आंसर. Now coming to, I'll just put on the
Title. Coming to rapid fire round, unfortunately, I don't have an hamper, but maybe Hmm. ये hamper के I बिना feel होगा. I'm in coffee with Rahul. Soon I'll get some NFT hamper or something like that कि कुछ तो हो जीतने को. पर Bitcoins ले yes, रहे हैं hampers में. absolutely. That's the future, I think. वही होगा कभी हाँ, ना कभी तो. true. Perfect. So चार पांच questions, whatever comes to your mind, and you can also explain कि क्यों, why you chose or why you gave that particular answer, just like in ठीक है, a brief way. ठीक Perfect. My first question is, what's the most frustrating thing about LinkedIn for you? है. The messages जो आ Hmm. जाते हैं, hey how are you, and Correct. especially I'm not being sexist here, but लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा आता है comparatively. Right. And some people just think कि वो ऐसी it's Facebook or Instagram, it's not LinkedIn. Randomly. Correct. And especially when I purchased LinkedIn Premium, I did not Hmm. purchase it, I got it. उसके बाद इन-मेल से मेरे को बहुत ज़्यादा हाय हेलो ऐसे आने लग गए थे, so Hmm. मैंने वो रिमूव कर दिया, मेरे को प्रीमियम हटाना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट. राइट ये तो प्रॉब्लम है आई थिंक ये स्पेशली गर्ल्स के साथ मोर इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इज व्हाट आई हैव सीन परफेक्ट सो जो भी देख रहा है अगर वो करता है तो प्लीज भाई मत करो यार डोंट आई डोंट मैं रिप्लाई नहीं करती है, लाइक ठीक है तुम प्रॉपरली लिखो देन आई विल रिप्लाई सब्जेक्ट के साथ. करेक्ट my second question is if you had to name one creator that really inspires you on LinkedIn or someone you really like following content of um tough question. yes controversial नहीं हो सकते and मतलब maybe three four people are seeing this and they're expecting my हाँ name will come एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई वुड से माइन. नहीं no और controversy you राहुल. have to and no controversy you have to name keeping like aside from me like except me I would say Ishan. smart answer Not because he's my friend or something, but because he has taught me how to write on LinkedIn. He actually sat with me. He was like, "यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है." He mm, is doing it from very long time. मेरे से 1 साल 2 साल पहले से. right And उसको देख के I was talking about the friend कि देखा ये hmm कर रहा है, तो उसको देख के hmm I was like कि I can do it. Then धीरे धीरे I asked him for कैसे करना है, steps बताओ. right And first post भी I think he made me write it कि ऐसे बैठ के hmm लिख. right I think network का बहुत importance पड़ता है इसी जगह पे like if you are around people who are Yes. progressive Hmm. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है and I'm sure he must have learned a lot of things from you and it's a mutual like kind of It's a mutual thing. this He thing also, he used to roam around with because he had a startup. So he hmm used to roam around with a lot of startup founders. They hmm used to post on LinkedIn. Then he got the inspiration. Then right and like then ठीक है आगे pass on करते हैं. He told his friends to do that. Some hmm worked on it, some didn't. It's right their call, but राइट जिसने कर it लिया makes a वो lot of difference. हाँ. सही है जिसने कर लिया लाइक दे हाँ, रियलाइज द exactly. पावर As ऑफ early दैट as you start. जब भी start करेक्ट करो करो. डन my third question is like what do you enjoy more as a content creator or as a like a consultant like what do you enjoy more like your work that you do or creating content online See, I chose both of them because I love both of them, but I love being a creator more. Although I get money from being a consultant more, but I right love being a creator more because I have the freedom to express myself in any which way possible. hmm मतलब even if it's not gaining views, even if it's sometimes मेरे को कोई vlog बनाना है but मेरे चैनल पे नहीं चल रहा है, but I love making that because I love showing that side of my life to people. right And sometimes it works also, but I have the freedom to show myself in any which way possible. And hmm वो फिर मजा भी आता है उस जर्नी में. right I'm not saying कि पूरे लाइफ टाइम ही आता है, बट इनिशियली थोड़ा बहुत आता है, देन धीरे धीरे यू गेट हैबिचुअल ऑफ दैट. फिर hmm बीच बीच में यू हैव फन विद दैट, बीच बीच में यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं, तो इट्स अ right जर्नी. बीइंग अ correct कंसल्टेंट उसमें आप सेम चीजें सबको रिपीट कर रहे हो. hmm मतलब correct ऐसा नहीं है कोई बंदा आके मुझे बहुत ही कुछ यूनिक पूछ रहा है. आई हैव दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स, वही उसी सर्कल में से उसी बबल में से आई एम पिकिंग अप थिंग्स एंड टेलिंग टू पीपल. hmm एंड वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स है, सो दे हैव द कॉमन डाउट्स क्वेश्चंस. कुछ यूनिक आता है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. right So being a creator, there's a lot of new things going on new trends. You see a lot of new features coming in new every day. LinkedIn, hmm Instagram, दोनों पे. right
एंड आई थिंक इट्स डायनामिक एज आई लाइक आई एग्री टू दैट कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, डेफिनेटली Hmm. काइंड ऑफ fall in Hmm. love with that Exactly. process. Hmm. Perfect. My last question to end this session is, what's your goal? Like, what can your audience expect from your content? What's your, like, what do you think when it comes to content creation? Like, if I reach this stage, then I'm like satisfied. I don't have a specific number in mind कि मेरे को 1 million चाहिए, 2 million चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. And Hmm. I feel there's no saturation in content. True. अब वो True. 1 million वाला क्रिएटर भी सोच रहा होगा मेरे 2 million क्यों नहीं है, 10 million वाला Correct. सोच रहा होगा मेरे 100 क्यों नहीं है. There's Correct. no saturation. But my goal is not to stay in content. My goal is to start up something of my own in the process. Maybe a course, Hmm. maybe something in freelancing, maybe an agency, because right now I'm a freelancer, but an agency would just make it further. Hmm. So my goal is not stuck on content कि Right. content ही content चलेगा, but I want to do other things also. I want to explore the other things. I've just recently left my job, so it's a gradual process. I Correct. mean, gradually I'll start doing things. Maybe I Right. go for a master's, no one knows right now, but Right. I think it's a journey to explore and enjoy. कुछ भी हो सकता है, like हाँ, and हम इस एज में है ना, अभी इस एज ब्रैकेट में है कि there is time for us to explore and do a lot of things, maybe for the next 3-4 years. right. Then once we are at that age कि 28 से ऊपर हो गए, अब we have to settle down, we have to choose one. उस टाइम तक we have to be settled. हमको एक Hmm. पोजीशन पे होना पड़ेगा. तो Right. it's a gradual process, but there's no end goal. But I personally feel कि I don't know what will happen to the creator industry when we grow up. I Hmm. mean, जब हम 50 साल के हो जाएंगे, will we be doing the same thing? Yeah, that question That's a comes valid like, question. I mean, I have this in mind. So इसलिए I don't want to get too much into this field. खाली creator में चलते हुए, I want to explore other things which sustain for life. right, absolutely. Perfect. It was super, super amazing. Just like a candid conversation, Charcha, the essence of this Same session. here. And I'm sure people who are watching this, and one thing I'd like to tell to all the people who are watching this and will be watching this, अगर अभी तक post नहीं किया है and you have been giving excuse कि मुझे content idea नहीं मिल रहा है, then take screenshot of this session, post your learnings of this session, tag both of us, and we'll personally comment on that, and we'll be happy to see कि यार इस session ने किसी को motivate किया to kind of start Even their one journey. person. राइट, इवन वन पर्सन लाइक दैट मैटर्स अ लॉट कि एक इंसान की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल पाए, सो दैट्स नथिंग लाइक इट. Absolutely. परफेक्ट. So thank you so much, Jasmine. Once again, thank you so much, audience, for joining in. We'll see you next time. Until then, take care.